अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर बैक विद द थर्ड एपिसोड ऑफ बुकिश बेंटर। आपकी आज की होस्ट हूँ मैं आयज़ा, और हमारे पास तो काफ़ी बड़ी और गहरी थीम्स वाली किताबें हैं। एक तो हमारे पास है दोज़खनामा एंड द अदर वन इज़ अ लिटिल लाइफ। एंड वी हैव आवर टू एस्टीम्ड गेस्ट टुडे, जिनसे हम बहुत सारे सवालात करेंगे एंड दे आर गोना गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बुक्स। एंड वी by the end of this very episode, we hope that you are convinced enough to try both of these books. So I would really like कि अगर हमारे guest खुद को introduce करें. Okay, so this is Hamza Ahmed Siddiqui from Computer Science faculty, and I've been working as a ebook writer these days. So I've been so much indulged with the literature already. That's nice. What about you? My name is Javiya Ishfaq. I've started. This is my first semester in the BScs program, and I'm looking forward to my time in ZABIST. That's great. दोनों BScs से relate कर रहे हैं and दोनों ने इतनी काफ़ी मुश्किल किताबें उठा ली मेरे हिसाब से। तो when it comes to दोज़खनामा, अब अगर हम हमजा से पूछे, so हमजा, can you like tell us a bit about दोज़खनामा कि किस किस्म से स्टोरी फॉलो होती है और like क्या चीज़ें जो राइटर हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है उसको? Alright, अच्छा दोज़खनामा, आप मुझे एक बात बताएं, दोज़खनामा वर्ड सुन के आपके जहन में पहली चीज क्या आती है? दोज़ख या दोज़ख के बारे में? Yes, एक जगह बिल्कुल जहाँ पे अजाब है and everything, but that's not what the writer is talking about in this book. For these both personalities जो इस बुक में फर्दर जाके इंट्रोड्यूस होती हैं, जिनके बारे में ये पूरी बुक इंट्रोड्यूस या रोम अराउंड कर रही है, both of those personalities, for those people, Dozakh is a place where they can say anything without any restriction. Without any restriction from any holy being. I won't be saying the exact word, obviously, but from any holy being. So the Dozakh is actually being a heaven for them. It's a book from a Kolkata-based journalist, Ravi Shankar Bal, और इन्होंने बुक जो थी वो एक्चुअली लिखी थी बंगाली के अंदर, एंड इट इज अ ट्रांसलेटेड वर्जन विच वी आर रीडिंग. प्लॉट स्टोरी का कुछ इस तरीके से है कि व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग, एक जर्नलिस्ट हैं हु बिलोंग्स फ्रॉम कोलकाता. ही इज ट्रैवलिंग टू अमरोहा. अमरोहा के अंदर उन्हें पता चलता है कि देयर इज सम गाय हु यूज्ड टू बी वेरी लिटरेचर फ्रीक, बट नाउ ही हैज गॉन क्रेजी. ही अप्रोच्ड हिम एंड उनसे पूछते हैं, इंटरव्यू के दौरान वो बताते हैं कि आई हैव अ मैन्युस्क्रिप्ट ऑन मी, डू यू वांट टू रीड दैट? ही सेज ओके गो अहेड. ही ब्रिंग्स अ मैन्युस्क्रिप्ट. वो मैन्युस्क्रिप्ट लेते हैं तो वो उर्दू लैंग्वेज में, एंड एज इट इज मेंशन कि वो जर्नलिस्ट जो है ही इज नॉट फेमिलियर विद उर्दू. वो लेके अपनी एक ट्रांसलेटर के पास जाते हैं. वो लोग जब उस बुक पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दिस बुक इज रिटन बाय सादत हसन मंटो. लेकिन इट टर्न्स अराउंड कि जो डेट डली हुई मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर, वो उस बिल्कुल नेक्स्ट डे की है. सादत हसन मंटो की डेथ के नेक्स्ट डे की डेट है जब वो बुक लिखी गई है, एंड दैट इज द टर्निंग पॉइंट. एंड इट कम्स अराउंड के व्हाई दैट साहब जिनके पास ये मैन्युस्क्रिप्ट थी, why was he labeled as a crazy person? This is basically a conversation between Saadat Hasan Manto and Mirza Ghalib from their graves. Saadat Hasan Manto की अगर हम बात करते हैं तो he was already a huge lover of Ghalib's work, और उनके लिटरेचर में काफ़ी बार ये चीज़ पढ़ने को हमें मिलती है मंटो साहब के, कि he always wished that he could have a conversation with Ghalib, which he couldn't in his life, but in this novel he is living that conversation from his grave in the internal words. तो ये तो काफ़ी आयरनी आ रही है इस स्टोरी में, एंड नॉट वंस और ट्वाइस, आई गेस रेपिटेटिवली आ रही है बार बार. सो दैट्स going to be a good read अगर if someone wants to try. Now when it comes to your book, it's such a great irony here too कि दोनों जो हैं किताबें बिल्कुल ही different उसमें फॉलो कर रही हैं genre में. We have like एक irony के साथ साथ serious किस्म की जो conversations हैं दोज़खनामा में. And now when it comes to A Little Life, can you like tell us a bit about the book? This book is basically about 4 friends. It starts with their high school life and beyond that, and how they all grew together. It basically starts with introduction of the 4 friends: JB, Malcolm, Jude, and Willem. Now they introduce Jude the last because he is that character that I think has suffered the most mentally. It's all about mental illnesses like self-abuse, self-harm, suicide, and everything that just include all these warnings that one should read before attempting to read that book. It's a heavy book, not meant for every reader, because there are some things that trigger a lot
So I think the main theme would be about relationships, how one should proceed with them, how one should remain loyal to your companions, your friends, and that family is not something that you're born in. It could be something that you can make too. That's nice, and we hope के same element since you are just starting university, तो you know यहाँ पे भी अच्छे से apply हो for you, कि you literally find a family here because that's how you're gonna enjoy your university life. Since both books एक जा रही है बिल्कुल past में, ठीक है, past personalities वो जो भी उनकी communication, and then one is उनकी future के बारे में बात होगी. No, it transitions between the past and the present. Past There and are the some present. parts where Yes. they're telling about the past and then it transitions back to the present. Basically, Jude has a lot of his memories that he doesn't tell people about, his abuse and everything. So if Oh. the author drops hints by hints of what had happened to him by writing about the past, how it impacted him, and how he's coping with it in the future, in the present that he's in. The past and the present, and since book के जो बिल्कुल basic themes होते हैं we are getting to know, तो ऐसा कोई common theme है that I believe यहाँ पे जो है a bit about the suffering. So any reader जैसे दोनों में से कोई भी book पढ़नी है, they have to be mentally prepared, very Yes. strong. And I believe कि even when you guys read these books, ठीक है, तो were there any moments when you were like कि you know for now this is enough, बेहतर है कि मैं अभी आगे ना बढ़ूँ, let me process it. So कोई ऐसी moments हो which you guys would like to share? अच्छा, दोज़खनामा के अंदर, because I am myself a huge fan of Manto Saab and Ghalib both. So for me it was such a epitome of mixed emotions that it took me around 6 to 8 months to complete this book, because whenever there was a conversation I could relate to what actually happened in the life of Manto Saab or Ghalib. There's an irony, or you can say an extreme end of this book, that there are totally 4 timelines which are being offered. Number one, Ghalib was born in 1786 or something, and he was dead by 1867. Second timeline, Manto Saab was born in 1912 and he passed away in 1955. थर्ड टाइमलाइन वो है जिसके अंदर ये जो जर्नलिस्ट हैं वो मिस्टर बस्सुम के साथ जो ट्रांसलेशन वगैरह देख रहे हैं. तीसरी टाइमलाइन ये. लेकिन चौथी टाइमलाइन वो है कि जिस भी टाइमलाइन में यू आर रीडिंग दिस बुक वो इम्प्लीमेंटेशन आती है, क्योंकि नो मैटर व्हाट यू से, जितने भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस और एनीथिंग, लेकिन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव बीन द सेम सब कॉन्टिनेंट. यहाँ से अभी जब जा रहे होते हैं तो फेयर हॉल वाली साइड पे एक बोर्ड लगा हुआ है, कराची ह्यूस्टन सिस्टर सिटीज. So that's not actually what I personally believe. You can say Karachi and Bombay are sister cities. Lahore and Delhi are sister cities. मंटो साहब की जो कब्र है वो लाहौर में है, गालिब साहब की जो मिर्जा गालिब की कब्र है वो पुरानी दिल्ली के अंदर है. तो उन जगहों की जो सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं वो दोनों जगह के सेम है. दोनों राइटर्स, पोइट्स और राइटर की अगर आप बात करें तो दोनों की लाइफ में जो सफरिंग्स उन्होंने फेस की हैं वो फाइनेंशियल भी थी, वो इकोनॉमिकल और सोशल एस्पेक्ट्स को जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से टकराते थे वो तमाम भी थी. तो ये तमाम सफरिंग्स आके जब मैच करती हैं और उन दोनों रिलेट कर पाते हैं. और मंटो साहब जो कि ज़िंदगी भर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 45-50 साल जो जिए, उन्होंने इसी ख्वाहिश में निकाल दी कि काश मैंने गालिब का एरा देखा होता. तो जब उन्हें वो चीज़ रिलेट करती हुई दिखती है कि हाँ, मैं जिस बंदे का सबसे बड़ा शदाइया फ़ैन था उस बंदे ने भी एग्जैक्टली वही सफ़र किया है, भले टाइमलाइन में 100 साल का फ़र्क है. और यही चीज़ उस जर्नलिस्ट को फेस हो रही है. और जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको भी पता चलता है कि इन 400 सालों के अंदर इस सबकॉन्टिनेंट के जो इश्यूज हैं वो बिल्कुल भी किसी तरीके से चेंज नहीं हुए हैं. यस, ये तो है. इंसान को कोई भी इशू अगर प्रॉब्लम जो भी होती हैं वो सॉल्व करने के लिए आपको खुद से एक एफर्ट करनी पड़ती है. एज लॉन्ग एज देयर इज इंडिविजुअल चेंज, वो फिर पूरा सोसाइटल चेंज पे आता है. सो ये जो आपने बताया ये तो थोड़ा हार्ट वार्मिंग भी होगा. आई बिलीव देयर वुड बी मोमेंट्स सिंस यू कुड रिलेट अ लॉट. एंड व्हाट अबाउट योर बुक, Javeria? In starting, it was totally about the characters, how they're feeling and everything. So like there was this friend Malcolm. He felt like he was useless because he was an architect. He was studying to be an architect. All he used to do was make these blocks of those architect buildings, and a lot of times he used to feel like he's useless. He won't be able to do much. Like that were some points of relativity, and there were some more in the future, like further in the book. But if I'm talking about the parts where I felt like I should stop reading it, there were a lot, because it would
those were something that impacted you so hard. Even if you had not experienced them, you couldn't like digest them. Because there's this kindness within Exactly. every human, तो वो आप So पढ़ते हैं in तो like I think after every 2 through 3 chapters, I felt like I should take a break. Usually, I read non-fictions, fictions, everything. It takes me about like 2 to 3 days max if I prolong a book. This book took me at least 2 weeks to complete because I couldn't read it in like one straight go. I had to take breaks. I had to like calm myself down. Like, okay, this has happened. Let's move on from it, and like I start reading it again because बुक में ना ऐसे बहुत सारे पार्ट्स है जहाँ you feel like oh this is the worst that can happen, but then the author tells you that no, oh wait, God, let it's me show like you. a warning to brace yourself. आगे और भी खतरनाक हालात होने वाले हैं. Since you took 2 weeks and you took 8 months, 6 to 8 months 6 to 8 approx. months, Yes. the best thing is that those were not easy reads, and none of you dropped the book that you were reading. So that's something great. It's more like you have to continue. अक्सर some people do this कि उन्हें कोई एक heavy book हो जाती है. They are like it's depressing me. It's mentally वो affecting me a ड्रॉप lot. कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए and then they like Yes. restart it again. Either they do this or वो एक काम करते कि वो एक और किताब लेकर आते जो लाइट होती है comparatively and then they start reading it. तो आप लोगों ने कोई लाइट रीडिंग या ट्राई करी? Because I mean, especially you, 8 months एक book के लिए dedication is strong. But did you try any other book or thinking about it? अक्सर people try to watch shows even, कोई webtoons पढ़ लेते हैं, comics पढ़ लेते हैं. नहीं, this was the only literature read I continued in those 6 to 8 months. भले से वो दिन का 1 पेज या 2 पेजेस होते थे because it was too much for me to digest. Given the reason I mentioned कि I have been always a avid reader of Ghalib Saab and Saadat Hasan Manto. So it was too much motivation for me. Yet it was such a difficult read that it took me a little too while. तो चलो, I hope कि जो भी ये books try करने जा रहे हैं, even myself, we are gonna stay dedicated and we are gonna read. Also, since you guys have mentioned कि regardless of the publishing year, do you guys think जो उसमें कुछ elements हैं या you know कोई issues वगैरह, for instance आजकल mental health पे we give it a lot of importance. ठीक है, it is important but हम मज़ीद इसको emphasize करते हैं comparatively जितने हम पास में नहीं करते थे. So when it comes to your books, do you think कि आज के हवाले से आजकल के जो आपकी बुक्स में themes elements are they like how relatable are they? Because दोनों का बिल्कुल it's like you're living in different countries at the same time. अगर कोई इंसान दोनों किताबें साथ उठा ले तो उसे तो लगेगा कि मैं एक बिल्कुल ईस्ट में ऑफ द वर्ल्ड जा रहा हूँ, बिल्कुल वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जा रहा हूँ. सो बट स्टिल अगर देखा जाए तो हाउ रिलेटेबल आर दे विद द करंट सिचुएशन जो भी है ऑफ द वर्ल्ड? अच्छा, we are talking about Dozakhnamaa. So it is very much relatable because both of these writers and poet, Mirza Ghalib and Saadat Hasan Manto, they have always been very progressive. सादत हसन मंटो की अगर आपने अफसाने वगैरह अगर आप पढ़ते हैं तो he has always been very bluntly, yes, he has been very blunt with his words in all those aspects. तो गिवन अगर आप इकोनॉमिकल सोशल फैक्टर के अंदर आप देखें तो दोनों तरफ से लेट इट बी गालिब और लेट इट बी मंटो साहब, दोनों की जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर वो एस्पेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा खुल के सामने आ रहे हैं, जिसके अंदर से आई पर्सनली बिलीव दैट बोथ ऑफ देम गालिब एंड सादत हसन मंटो साहब का तो बहुत क्लियर है जिन लोगों ने पढ़ा है मंटो साहब के अफसानों को कि ही हैज labeled as फास्ट टू वो मंटो साहब कहते हैं ना कि मैं स्याह कलम नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ तख्ते स्याह पे सफ़ेद चाक से लिखता हूँ ताकि उसकी स्याही और वाजे हो जाए. रही बात इस सोसाइटी को कपड़े पहनाने की तो मेरा नहीं दर्जी का काम है. तो मंटो साहब ने जो वुमेन एम्पावरमेंट का एक टॉपिक अगर आप ले लें तो उस टॉपिक पे जो मंटो साहब ने जितना खुल के लिखा है आप उसको फहशगोई कह सकते हो, लेकिन बाकी एस्पेक्ट्स के अगर आप फेमिनिज्म के एस्पेक्ट को मिलाओ तो उन्होंने एक्चुअली उस टाइम जोन के अंदर जितने भी मसले मसाइल कि लेडीज़ को या फीमेल्स को फेस होते थे उन्होंने उसको खुल के लिखा है. कोई ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने करने की कोशिश नहीं है, जिसको बाद में फहाशी के अल्फाज से भी नवाजा गया, उन पे कोर्ट के केसेस भी हुए. अच्छा, और गालिब से उनके रिलेशन से रिलेटेड एक और मजे की मैं आपको बताता चलूँ. एक बड़ी मशहूर इंडियन मूवी है इनिशियल टाइम की, जिसके बारे में एक डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का जो भी मशहूर हुआ था कि क्या गालिब फिल्म देखी है आपने? तो वो जो गालिब मूवी थी इट वाज आल्सो रिटन बाय सादत हसन मंटो. Saadat Hasan Manto traveled and migrated from India to Pakistan, but mentally
he was always there. ये तो जैसे जैसे किताब के बारे में बातें खुलती जा रही हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट सामने आते जा रहे हैं. एंड when it comes to your book, Javeria, what would you like to say about your book? It focused a lot on the struggles teenagers go through, especially in their work life and those work aspects. There was this character Willem. He aspired to be an actor, and obviously in New York you have to do Broadway shows and something at all to reach a certain point where you can be recognized as an actor, even if it was in the 80s, 90s, or even in today's time. So it told about that. Then for Jude, he was very smart. He opted for being a mathematician, but then he changed his study course and became a lawyer. Um, when he became a lawyer, he was proposed a position for a judge. And when you become a judge, you know, like there are certain parts where the way was good, everything was good, but then you sometimes had to support the wrong person or the teams because there were a lot of threats being imposed on you. So he had to transition with that job and how he refused that position, and then there were some other elements in his work life that he struggled through. Um, Along with that, he was also suffering with trauma, uh, self abuse, um, suicide attempts, a lot of it, and he had a lot of unhealed childhood trauma. So Jude had a lot of things going around him, which sometimes he couldn't cope up with. So he used to self harm a lot, which would leave him bleeding and everything. When we come to JB, he was an artist and he used to collect like very weird things like hair, garbage, and stuff like that just to make art pieces. He got famous for it in the future. He received the success of all the hard work he did, but again, that struggling part was tough for him. And then we come to Malcolm. He felt useless. He used to live with his parents. He felt like his life is going in no direction whatsoever, like that transition to being an architect, buildings and that were very popular, and he he left his old work, joined with his two friends to make a company, and how he became successful running it. Again, all three of them had several traumas and everything they had to go through, but it mainly focuses about all the mental traumas and everything that people can go through, and how those four friends remained for each other throughout their lives, even when they got to their 50s and 60s. Four stayed consistent in their friendship. That's such a heartwarming thing to happen in the whole story, especially जब उनके ज़िंदगी में इतने मसले मसाइल आ रहे हैं. And one good thing is that regardless the field you are going for, the occupation you are going for example यहाँ पे architect का था, तो there is literally nothing useless. ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है, like जो भी आपको फील्ड There's पसंद करनी है. certain things that you're thinking about, oh, yeah, I feel useless, I do this, I'm not perfect, and like this. But when you're putting the hard work that you're putting, it actually shows to other people that no, this person is doing this work, he's working hard, he'll achieve something. But you don't always know that. You'll always remain in that self doubt. Maybe this is less, maybe I should have done more. It relates to the reality of, I think, every person. Yes, because even with अगर इंसान बहुत self positivity पे जाता है, there are times when people are like, I have not done enough, because world is constantly adapting, new things emerge every other day. Most of the times people feel कि हम जो है ना दौर में पीछे रह गए हैं, तो ये तो constant है, but as long as you can cope up with it, because there is no harm in being down for a bit. Yes. As long as you are happy, any person cannot stay constantly happy, ये तो देखा ही गया है, even books में भी highlight हो रहा है, but as long as you can overcome that and trust yourself, तो I believe ये किताबें भी अच्छा खासा हमें वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही हैं कि मसले मसाइल तो होते रहते हैं, तो they're part of life, but we have to go on because life goes on. So since these books, I myself am convinced to read. ठीक है, so I would like to know कि कुछ ऐसी lines या
उस बुक में होंगी, या कोई कोट होगा या लाइंस विच, या अक्सर लोगों के लिए एक पैराग्राफ होता है या 2 लाइन्स होती है, 1 लाइन, विच यू फाउंड लाइक कि यू नो अगर मुझसे कोई भी इस किताब के बारे में बात करेगा तो मेरे ज़हन में सबसे पहले ये लाइन आएगी, मैं किसी को ये लाइन बताऊँगा या बताऊँगी. सो are there any lines or quotes like that? Okay, there's a paragraph from Dozakhnamaa which I'm gonna read. Sure. This is a conversation where Ghalib is addressing Manto Saab. Poetry is not sermon delivered from a mosque. After all, it is one's final words from the edge of the ravine. Face to face with death, I wrote about my love, my ishq on blood-stained paper day. Day after day, Manto bhai, my hand became numb, but I still wrote. I knew that my ghazals would provide comfort to many people one day. I wasn't pride, Manto bhai, but wounds. I wrote about each of my wounds. How could it not possibly touch people? And this is a certain reality because सब कॉन्टिनेंट के जितने भी राइटर्स या पोइट्स गुजरे हैं उनके साथ एक डिलेमा रहा है कि इन देयर टाइम जोन जब वो जिंदा थे, जब वो लिख रहे थे, तब नो वन रिकॉग्नाइज देयर वर्क. लेट इट बी गालिब साहब, क्योंकि गालिब कहते हैं कि होए मर के हम जो रुसवा, होए क्यों ना घर के दरिया, न कभी जनाजा उठता, न कहीं मज़ार होता. तो ये जो पूरी कन्वर्सेशन चल रही है कहानी नहीं है, एक दास्तान है. और दास्तान और कहानी में वाहिद फ़र्क ये होता है कि दास्तान चलती रहती है, कन्वर्सेशन चलती रहती है, दास्तान का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इट जस्ट कीप्स गोइंग ऑन. एंड व्हेन यू आर रीडिंग दिस बुक यू रियलाइज दिस वन थिंग कि नॉर्मली जो ट्रांसलेटेड बुक्स होती हैं वो अपना एसेंस लूज कर देती हैं, लेकिन इस स्टोरी के अंदर इवन दो इट वाज इनिशियली रिटन इन बंगाली और इट गॉट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, लेकिन स्टोरी के अंदर ऑलरेडी ये स्टोरी मौजूद है कि जो बंगाली जर्नलिस्ट को एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली है वो उर्दू में है, उससे उर्दू नहीं आती, तो ही इज ट्रांसलेटिंग दैट इनटू हिज ओन लैंग्वेज सो ही कैन वर्क ऑन टू इट. तो बिकॉज वो ट्रांसलेशन का फैक्टर ऑलरेडी बुक विद इन द बुक के अंदर मौजूद है, तो इट डजंट लूज इट्स एसेंस. सो दैट्स प्रीटी मच इट. इट्स नॉट मोर रिलेटेबल कि जैसे हम करते हैं कि हमें कोई चीज़ ट्रांसलेट करके पढ़नी है या लर्निंग न्यू लैंग्वेज या उसमें कोई स्टोरी पढ़नी है. सो दिस इज सच अ गुड रिलेटेबल एलिमेंट है. एंड Chiraya, what about your favorite quote or line? So this isn't like a quote or something, but a statement that was written by the author when he was telling the story through William's point of view about Jude. It was, and so I try to be kind to everything I see, and in everything I see him. It's a beautiful aspect of a person that when you fell in love with them, you try to associate the good things in your life with them. If you randomly like, oh, this flower is beautiful, I'll pick that out and I'll give it to person that I love. It's a very beautiful line of how two people could like be there for each other and be compassionate, more kind towards other people when they realize that there are other people that have suffered through something, and that we should always be kind and remain humble. So this is element I found के since Javiya mentioned companionship. Even जब हमजा ने अपनी favorite जो paragraph पढ़ा है, जो letter पढ़ा है, उसमें भी the way it was written एक आ रहा था companionship का element. So yes. Companionship में या even if the person is not there with you at the same moment, the companionship is so strong that even when you write something to them or about them, जैसे जविया के उसमें था, so there's this heartwarming feeling that you get within yourself. So through these books, since so many good elements are highlighted, even the issues and the mental health, कुछ जब आप पढ़ते हैं अक्सर होता है you absorb many things from the book. ठीक है, कोई शो हो, कोई भी book हो, so कुछ ऐसे element है which you guys like absorb. For example, किसी ने पढ़ा कि भाई इसमें लेटर्स बहुत है, तो यू नो आई एम गोना राइट अच्छे से मैसेजेस और आई एम गोना कम्युनिकेट प्रॉपर्ली विद माय फ्रेंड या कुछ भी. तो ऐसी कोई चीज़ें थी जो आपने खुद एब्जॉर्ब करी विद इन योरसेल्फ, या आपको फील हुआ कि यू नो सिंस द टाइम आई हैव क्लोज्ड दिस बुक मुझे अपने अंदर फील हो रहा है कि थोड़ा सा चेंज आया है? अच्छा, दोज़खनामा इज अ वेरी गुड रीड. पर्सनली आई विल रिकमेंड यू पीपल टू रीड इट बिकॉज इट इज नॉट जस्ट ए फिक्शन. It is a fictional story and it has got biographies of two greatest of all time authors from this subcontinent. So एक जो इमर्जिंग सिचुएशन बन रही है कि आपको एक फिक्शन भी पढ़ने को मिल रहा है जिसके अंदर एक फ्रॉम द इटर्नल वर्ल्ड देयर कन्वर्सेशन इज गोइंग टू हैपन, और उनकी जितनी भी कन्वर्सेशन है उसके अंदर उनकी बायोग्राफी चल रही है. So you are not only reading the fiction, you are getting to know about these two personalities because all those points are very much factual. Because सादत हसन मंटो की जो लास्ट विश थी, इट वॉज जस्ट अ सिंगल थिंग
कि when you guys make my grave, तो gravestone पे एक स्क्रिप्ट लिख देना। वो स्क्रिप्ट थी कि ये सादत हसन मंटो की कब्र है, जो आज भी ये समझता है कि उसके लफ्ज लोहे जहां पे मुकर्रर नहीं थे। अगर इफ वी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो दिस इज द ग्रेव ऑफ सादत हसन मंटो, हु स्टिल थिंक्स दैट who is still confused that who is a greater storyteller, either God or himself. Oh, and what about you, Javeria? This is a work of fiction. It does not end on a good note. Although, like when you get to like the epilogue, with like the last 2-3 pages, you'll feel like a sense of calm over yourself. Right? Okay, this happened. This was tragic, and this something happened in someone's life. But I think I thought to be more kind to other people. Think about themselves, because you never know what a person is going through. Definitely. And you do not know what even the tiniest statement that you make could trigger that person's whole day, or something that would lead them to like a very bad mental state of mind. So I learned to be very nice to people, be kind, and I not be very angry or Yes, but as Rhea mentioned, all the stories do not have a happy ending. Yes. There are realities that you have to accept, चाहे वो real life में हो या कोई books के बारे में, because readers we always have expectations कि जब we see characters suffering a lot, तो at the very when जब book का end हो रहा होता है, we are like अब थोड़ा happy ending होगी, we are gonna feel happy for them, अब they are finally gonna सारे मसले उनके solve हो जाएंगे, because we feel कि they deserve it. Honestly, जितनी उनकी suffering होती है उसके बाद we deserve it. Even in yesterday's episode 2, उसमें भी we had the same thing. You were like so ready, the readers, कि अब जाके happy ending होगी, but then again something tragic happens. तो I think it's all about that part of life that it doesn't always have to be like a happy ending, but there are certain parts where you're happy, and there are certain parts where your life is at a very low point, but at the end of the day we all have to live through that. Yes, exactly. Indeed, So indeed. for instance, if there's a person, just a hypothetical situation, जिन्हें reading, they want to get into reading. There are so many people who are like, we want to get into reading. हम कहाँ से शुरू करें, ठीक है? I don't think they should start from here. They should probably pick a light read, build their reading ability, and then pick these books. Because if you're jumping to something of a very dark theme from the beginning, it would be very hard for you to process it. Yes. Secondly, you won't feel connected to reading that much again, which was the purpose you were picking a book for. So I probably think that they should start with a light read, be consistent with reading, and then pick these books. Because These are very mature and dark themes. Yes, because जितने थीम जवेरिया ने मेंशन करें, इट्स बेटर कि आप अपना जो कहते हैं ना फर्स्ट मील ऑफ द डे के हिसाब से द फर्स्ट रीड of your journey ना select करें. And Hamza, do you have the same opinion when it comes to Dozakhnamaa? I do have the same opinion. When someone personally asks me what book we should start with, I recommend them some light-hearted book. For example, normally I ask them कि you should start with Alchemist. The rom-coms or something. Alchemist is the perfect book. Personally, in my personal opinion, कि you should start with this book. It's a very light read. So yes. And what if there are some people एक Alchemist आते हैं कि they even find that one थोड़ा सा difficult to understand होता है, एक आपका comprehension level होता है. Even though कुछ लोग होते हैं कि वो first time भी book पढ़ रहे होते हैं, and you know अगर कोई there are going to be so many people, you never know कि friends क्या पढ़ें, जिन्होंने पढ़ी भी होगी जो आप दोनों की books ने, and उनका comprehension level इतना आसान होगा उनके लिए. तो when it comes to these books, do you think कि एक होता है ना कि इंसान की खुद की अप्रोच होती है, वो इस तरीके से बुक को अप्रोच करता है एक नेचुरल. तो डू यू थिंक ऐसी कोई पर्टिकुलर अप्रोच होनी चाहिए? फॉर इंस्टेंस व्हेन इट कम्स टू सोशल स्टफ, तो थोड़ा ओपन माइंडनेस होनी चाहिए, या यू नो थोड़ा सा ब्रेस अपने आप को करना. तो डू यू थिंक कोई ऐसा एलिमेंट है जो पर्टिकुलर होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू योर बुक्स? Related to, if we are talking about this specific book, there are certain aspects obviously के the socio aspects which these people had to go through, so one can be taking steps to make those social aspects better, and especially let it be writers or poets of this subcontinent, ये दोनों
गालिब मंटो हो गए, उसके बाद जॉन साहब आज के अगर एरा के अंदर हम लोग देखें तो जॉन एलिया हो गए, उनकी लाइफ स्टोरी भी वो 100-200 साल 3 डिफरेंट सेंचुरीज के अंदर ये स्प्रेड थ्रू हो रहा है, लेकिन द स्टोरी इज स्टिल सेम। एक अच्छा राइटर जिसे हम आज अच्छा राइटर मानते हैं, वो आज से 100 साल पहले अपने एरा के अंदर वैसा ही राइटर या पोइट रहा होगा जैसे आज के एरा के हम राइटर्स और पोइट्स को ट्रीट करते हैं। तो क्योंकि इट्स गोइंग टू बी समथिंग कंट्रोवर्शियल, लेकिन पीपल डू प्रेफर व्हेन इट कम्स टू उर्दू लिटरेचर, मोस्ट ऑफ द पीपल डू प्रेफर सम स्पेसिफिक राइटर्स जिनकी बहुत फैसिनेशन और लाइक फैसिनेटेड सी वर्जन्स उनके चल रहे होते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू द रियलिटी, पीपल आर एक्चुअली रनिंग अवे फ्रॉम द बुक्स व्हिच आर throwing the reality in your faces. So be considerate with the literature people. Yes, because literature तो ऑनेस्टली अगर जॉनरास भी आते हैं तो जहाँ पे अगर फैंटेसी का जॉनरा है तो वहाँ पे हमारे पास नॉन फिक्शन भी आ रहा है, तो थोड़ा आपको रियलिटी का भी मेंटेन करना पड़ता है, बिकॉज देयर इज दिस वेरी थिन थ्रेड बिटवीन दीज टू. एंड जवेरिया, I think that yes, people should be open-minded when reading this book because it's about two boys having a relationship, which again is gay. It's not accepted by many people. First that. Secondly, it will be a spoiler. I won't give that. Yes, you can, because जो review, the ones who want to know more information about the book, there are always certain plots या themes या कोई particular stories के अंदर stories चली होती हैं that interest many people. Okay, so like when Jude and William started their relationship, William claimed that relationship to be open-minded, open relationship, which is basically that both people are committed to each other, but they're not on like very committed terms. Like no, I'm just gonna be with you, because Jude had sexual trauma obviously, and he refused to have sex with William, whilst William need to release his energy through sex. So he used to like find people on his shows, like where he was shooting all that for the production set where he was at. He used to like have people with there. So it angered me a bit because obviously when you're in a relationship you expect a person to be loyal and everything, but again Jude was not in a very good state of mind. He was okay with it, he tried to process that, and then I think that was a point which angered me. Thirdly, this book was recommended to me by a friend. So when I started there, they told me like, you know, when you get towards the end, don't read it in the classroom or somewhere with a lot of people. Try to be alone. Like when I read a part, no one was with me. And I thought, oh, this was the most tragic part. I'll just continue there. I went to college. I had like an hour before the assembly. I started reading it because it was towards the end. I was like, I'll just rush through this and I'll finish it. The book transitioned to like the most tragic part, which was in that book, and I felt like crying. And that friend came through the room and she was like, "Do you need a hug?" And I was like, "Yes, please." Because ये अच्छी advice है. Don't try to read a book just before the assembly hour or in the very starting of the day, especially because when you have been warned. start sobbing. Oh God, especially when you have been warned, जैसे जवेरिया के साथ हुआ कि आपने जो है ना, like हाँ, अगर जैसे कि टाइम है, आपको भी 2-3 घंटे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? तो when you know a book is, this is such a good advice कि भाई when you know a book is going to be have very dark themes वगैरह, तो एक होता है रीडर्स के लिए, बिकॉज अगेन क्यूरोसिटी जो है ना हर रीडर को होती है, ठीक है? दिस इज वेरी कॉमन टू गेट टू द एंड दैट व्हाट हैड हैपेंड. ये थोड़ा सा उल्टा अफेक्ट कर गया उन पे, ठीक है? तो ये आपने अपने सर्वाइविंग एज अ रीडर सर्वाइवर के लिए ये टिप्स लेनी है कि इवन दो यू आर क्यूरियस एंड यू आर डाइंग फ्रॉम क्यूरोसिटी, आपने बिल्कुल दिन के शुरू में नहीं पढ़नी, बिकॉज योर रूटीन इज गोना फॉलो, ठीक है ना? तो अच्छी बात तो नहीं है कि वो पूरी डिस्टर्ब या कुछ हो जाए. So, we are glad you are okay. We're really glad, and we're also glad that you're here and sharing your experience. So, since I think कि जितनी भी इन दोनों books के बारे में हमें मेन थीम्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, और लाइक हाउ द स्टोरी गोज, लाइक हमजा ने बताया कि हाउ उसमें 4 टाइमलाइंस आती हैं, एंड हाउ जवेरिया ने बताया अपनी बुक में कि 4 कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में, एंड देन यू नो पास्ट के हम मेमोरीज से रिलेट करते हैं और प्रेजेंट टाइम्स में आ रहे हैं. तो
the information that we have, we hope that it has been useful for the viewers, and we are going towards closing the episode for today. Do you guys, our esteemed guests, do you guys have any last words? नहीं, last words हम dark theme में फिर चलेंगे. मतलब कोई ऐसी अच्छी सी कोई advice या कुछ भी about the book or anything generally? Do you guys have something to say about it? जैसे हमने देखा, be kind, be nice to people, be very considerate when it comes to poets and writers, ठीक है, because it's very easy to criticize किसी का भी काम. It's the most easiest thing. So एक होता है कि आप पढ़ें, आप समझें, आपको नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, just go and select a different book. It's very easy, ठीक है, because जो writer अपने aspect से लिखता है, it's something brilliant and great कि वो दूसरों से relate करता है, and अगर वो करता है तो that's good, अगर आपसे relate नहीं कर रहा तो again that's okay. So I hope कि आज का जो third episode था, it was useful for the viewers and even the guest and the host. We hope कि आप ये किताबें पढ़ें, इन्हें experience करें, and if you have read those, तो let us know कि जो elements you guys want to talk about in the comments obviously. And since you guys अपना जो है रूटीन से टाइम निकाल के आए and informed many readers, that's something great. So thank you so much for being here, and Thank you for having us. I hope you guys had a good experience. And with that, we'll be closing our episode for today. Allah Hafiz, and see you in next episode.